Students, today we are going to conduct the experiment in which we have to determine the resistance of unknown wire by using a meter base. So, what is our aim? Aim is to determine the resistance of unknown wire by using a meter base. Second point is operators. What are the operators that we have to use in this experiment? Battery liberator, resistance box, meter base, galvanometer, connecting wires, jockey and one way key. Clear to all of you? ठीक है, ऑपरेटर्स हो गया. Then second आता है प्रिंसिपल और थ्योरी. तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge. किस पे बेस्ड है ये? As you know, according to Wheatstone bridge, we have four resistances. We have four resistances in which three known while one is unknown. So we have to find out the value of that unknown resistance. Is it clear to all of you? Okay. We have four resistances named as P, Q, R, S. Now we are going to perform this experiment. Before this, we have to know what is P and what is Q. Whenever we move jockey over the wire, then we get a null point. हम लोग क्या हमें क्या मिलेगा? Null point. Means there will be a point at which the deflection in the galvanometer is zero. मतलब एक ऐसा point होगा इस लाइन पे हम इस जॉकी को मूव करवाएंगे, बहुत सॉफ्टली मूव करवाएंगे. इस मीटर स्केल पे इस वायर पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे जो galvanometer डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा? जीरो. उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट. एंड से द लेंथ ऑफ द galvanometer इज से द लेंथ ऑफ द वायर इज L. इस वायर की लेंथ को कितना अज्यूम करेंगे हम? Now what we know, if a wire has length means it will have some resistance. क्या होगा इसमें? Resistance. Let us assume that the resistance be P. Resistance को कितना assume करना है? P. So P is directly proportional to L. And the remaining length will be, this is L, then the remaining length will be 100 minus L. Remaining length कितनी हो जाएगी? 100 minus L. So let us assume that the resistance of length 100 minus L be Q. Then Q is directly proportional to 100 minus L. Now we vanish this proportionality sign. Then what we get? We get a constant K. So this will become P is equal to KL. Say equation 1. Next, Q equal to K into 100 minus L, equation 2. What we have to do? Divide equation 1 by equation 2. Equation 1 upon equation 2. Now what we'll get? P upon Q will be equal to KL upon K into 100 minus L. K will be cancelled out, so this will become L upon 100 minus L. So P upon Q we got P upon Q. P upon Q equal to L upon 100 minus L. Is it clear to all of you? Yes, sir. Now we know that according to Wheatstone bridge condition, P upon Q is equal to R upon S. So this implies that S will be equal to 100 minus L into R upon L. This is our formula to determine the value of unknown resistance. Now we are going to conduct practical. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yeah? Okay. Okay, now we are going to perform this experiment. To do this, first of all, we have to connect the positive terminal of the battery to a plug key, one-way key. Then other end of the one-way key to the meter base. Another end of the meter base to a negative terminal of the battery. यहाँ पे दो एंड्स हैं, से A1 B1, A2 B2. A1 B1 में हमने वायर कनेक्ट कर रखा है अननोन रेजिस्टेंस वाला, एंड इन A2 B2 में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है. At point D, a galvanometer is connected and then a jockey, or we can say that a jockey is connected through a galvanometer. First of all, we have to check the circuit is accurate or not, or the circuit is complete or not. To do this first of all, we on the key and then move the jockey over the wire. क्लियर है? ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया. इसके बाद में चेक करने के लिए हम दोनों एंड्स को चेक करेंगे. पहले इस वायर का राइट एंड पे आप देख रहे होंगे galvanometer में डिफ्लेक्शन जो है वो कैसा दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिख रहा है ना. वही अगर हम बात करेंगे राइट हैंड की, सॉरी लेफ्ट हैंड की, देन डिफ्लेक्शन विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन. मींस अगर हम राइट में जा रहे हैं डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा, अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं डिफ्लेक्शन राइट में होगा. मींस आवर सर्किट इज कंप्लीटेड. सर्किट कैसा है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें रीडिंग नोट करनी है. रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा R मींस रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. क्लियर है? देन नल पॉइंट लेंथ L
remaining length 100 minus L and S. What is the formula of S? S is equal to R into 100 minus L upon L. We have to conduct this experiment twice, thrice, 4 full times. 2 बार 3 बार, जब 2-3 वैल्यूज हम लोग यहाँ 1 2 3 थ्राइस करेंगे. क्लियर है ना? पहले रीडिंग के लिए सबसे पहले मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस बाहर निकालूंगा. ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस हमारा बाहर है, मीन्स हम यहाँ R कितना लिखेंगे 1. ऑन द स्विच, नो मूव द जॉकी. कौन कंडक्ट करेगा? हाउस वे. You have to see the deflection in the galvanometer whenever you have to stop whenever the deflection in the galvanometer is 0 degree. Sorry, 0. Move. Yes, please. It is very close. Tell me the length. You can see the deflection in the galvanometer is 0. Means this is your null point. Now we have to note the length. आइए आप इधर देख सकते हैं. Please see. You can see the deflection in the galvanometer is 0 degree. Just note the length. 36.3 36.3. So what is the remaining length? 69.7. Now we have to calculate. Yes. You have to move the jockey over the wire. Then see the deflection point in the galvanometer. As you got 0 mark in the galvanometer, means this is your null point. And you have to note that line whenever where the deflection in the galvanometer is 0. ठीक है, 25 हो गया. ये कंटिन्यू कर लेते हैं. Do not stay for more time. You have to note the reading and then off the battery. खाने राजे देख क्या रहे हो? Extra activity. ठीक है ना? 91.2